हेलो एवरीवन, वेलकम टू CHSE कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज लाइव क्लास रे समस्त स्वागत, समस्त गुड इवनिंग। आज वीडियो में कौन डिस्कशन करिया? आज लाइव क्लास रे आमे इलेक्ट्रोनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स रो जेतो सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि 2 मार्किया 3 मार्किया और ऑब्जेक्टिव जहा सब परीक्षा रे आसीबो सेतु आज कोन सब डिस्कशन करिया। बुझिला? फर्स्ट अछि तमरो इलेक्ट्रोनिक्स चैप्टर। ए चैप्टर रु तमरो 8 मार्क पडिबो। बुझिला? तो 8 मार्क पडिबो कोदरु इलेक्ट्रोनिक्स चैप्टर रु। और न्यूक्लियर फिजिक्स मध्ये सेटा भी इंपोर्टेंट चैप्टर। तेनु न्यूक्लियर फिजिक्स और इलेक्ट्रोनिक्स रो सब जगह इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज लाइव क्लास रे हम डिस्कशन करिया। मो वॉइस समस्त क्लियर आछि तो? ठीक है, जदि क्लियर आछि त यस मेसेज कर दियो। समस्त गुड इवनिंग। ठीक है, डिस्कशन करिया आरंभ करिया। फर्स्ट हमर असला एनर्जी बैंड इन सॉलिड। कौन आसला हमर एनर्जी बैंड इन सॉलिड। ताले सर्वप्रथम हमको जाने कहबो व्हाट इज एनर्जी बैंड। व्हाट इज एनर्जी बैंड? द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन ए सॉलिड इज नोन एज एनर्जी बैंड। कौन कहली? द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन ए सॉलिड इज नोन एज एनर्जी बैंड। तमे जदी एनर्जी बैंड रो डेफिनेशन मन रखिबो तार जो तीनटा को टाइप्स अछि तमरो ऑटोमेटिक मन रहि जिवो। बुझिला? डेफिनेशन डाक लिखो, खाता रखी के समस्त नोट करो, खाली पढ़ी देले हबनी, ताकि धीरे धीरे नोट करले भी मन रहइबो। बुझिला? ताले एनर्जी बैंड कोन? द रेंज ऑफ एनर्जी possessed by an electron in a solid. The range of energy possessed by an electron in a solid is known as energy band. Very important question. Energy band. बुझला? तले कौन कहली? The range of energy possessed by an electron in a solid is known as कौन? Energy band. बुझला? It is of 3 types. कौन है ये? 3 प्रकार। It is of 3 types. कौन कौन? Valence band, conduction band, और असला forbidden energy gap। कौन? Forbidden energy gap। बुझला? तले व्हाट इज एनर्जी बैंड? द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन ए सॉलिड इज नोन एज कौन? एनर्जी बैंड। मन होला कौन? द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन ए सॉलिड इज नोन एज एनर्जी बैंड। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। वन इज वैलेंस बैंड, अनदर इज कंडक्शन बैंड, अनदर इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। चल देखो, मतलब डायग्राम टा करछि। देखो, एटा हला एनर्जी लेवल डायग्राम। ए तळटा को कह जाय वैलेंस बैंड। कोन? वैलेंस बैंड। ऊपरटा को कह जाय कंडक्शन बैंड। कोन कह जाय? कंडक्शन बैंड। आ तांको भीतर जो दूरता अछि बा सेपरेशन अछि ताको कह जाय फॉरबिडन एनर्जी गैप। कोन? फॉरबिडन एनर्जी गैप। बताको कौन कह जाए? बैंड गैप। कौन कह जाए? बैंड गैप। बुझिला? ताल मु कौन कहली? व्हाट इज एनर्जी बैंड? द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन ए सॉलिड इज नोन एज एनर्जी बैंड। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। वन इज वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ताले व्हाट इज वैलेंस बैंड? मन रखो, मु कौन कहली भल से मन रखे चेष्टा करो। द रेंज ऑफ एनर्जी
possessed by valence electron in a solid is known as valence band कोन कहली एमती लिखा हो द रेंज ऑफ एनर्जी possessed by एटी थिला खाली इलेक्ट्रॉन valence band पे कोन लिखा हो valence electron in a solid is known as valence band कोन कहली द रेंज ऑफ एनर्जी possessed by कोन valence electron in a solid is known as valence band सेम कंडक्शन बैंड कोन लिखा हो द रेंज ऑफ एनर्जी possessed by conduction band electron in a solid is known as conduction band कोन कहली valence band पे कोन लिखा हो द रेंज ऑफ एनर्जी possessed by valence electron in a solid is known as valence band so the conduction band पे कोन लिखा हो the range of energy possessed by conduction band electron in a solid is known as कोन conduction band तापर आसला forbidden energy gap बा band gap का कहजे it is the separation between the valence band and conduction band कोन it is the separation between valence band and conduction band तल कोन forbidden energy gap बा band gap का कहजे दीटा band भीतर जो distance ता अछि बा separation अछि ता कोन कहजे forbidden energy gap बा ताको band gap कहजे बुझियला तले व्हाट इज एनर्जी बैंड द रेंज ऑफ एनर्जी possessed by an electron in a solid is known as energy band it is of three types one is valence band another is conduction band another is कोन forbidden energy gap तले व्हाट इज valence band the range of energy possessed by valence electron हेले valence band conduction band electron हेले conduction band और separation between valence band and conduction band is known as forbidden energy gap आपको नोट कर दिया जदी कार कोन डाउट अछि ताले पचार हाँ सब चैप्टर एमती वीडियो करिवे समस्त बुझे लगी न्यूमेरिकल हाँ प्रैक्टिस करेगा केमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड 2-3 मार्क केमिस्ट्री तो चैप्टर वाइज डिस्कशन कराई जो सिलेक्टिव क्वेश्चन जदि आउट सिलेक्टिव दरकार तमरो चैप्टर वाइज सब डिस्कशन कराई तथापि आउट तमरो 70 मार्क देखो तमरो 70 मार्क बोर्ड एग्जाम रे आसीबो आउ 30 मार्क प्रैक्टिकल 70 मार्क रु मु कोन करबी तुम 50 मार्क रो गोटे क्वेश्चन बनै कि दे देबी बुझियला 20 मार्क एमसीक्यू को छाडी कि केवल 50 मार्क थ्योरी तम दे देबी जेंति बोर्ड पैटर्न 5 मार्क 3टा 5 मार्क जेतो 10टा जेतो से 3टा करिवो सेंति 2 मार्क 12टा 3 मार्क 12टा दे देबी तुम से भल से प्रैक्टिस करो सेत्रु क्वेश्चन पड़ जिवो बुझियला मु दे देबी ठीक अछि नेक्स्ट पढिबा तापर हम पढ़िबा कंडक्टर कोन सेमीकंडक्टर कोन इन्सुलेटर कोन कंडक्टर हम पढ़ सला पर जो सेमीकंडक्टर पढ़िबा ता अंडर रे पढ़िबा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कोन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कोन तापर पढ़िबा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दु प्रकार पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर बुझियला तो से सब का हम डिस्कशन करिया देखो फर्स्ट असला कंडक्टर व्हाट इज कंडक्टर कंडक्टर कहा को कहै जे जहां मध्य दे इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर जिवो कोन कहली सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजीली इज नोन एज कंडक्टर जहां मध्य दे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जिवो ताको कहै जे कंडक्टर जहां मध्य दे पार्शियली फ्लो करबो ताको कहै जे सेमीकंडक्टर जोतरे टोटल फ्लो करबो नै ताको कहै जे कोन इन्सुलेटर बुझियला substances through which electron can flow easily is known as conductor
Substances through which electron can flow partially is known as semiconductor. Substances through which electron can never flow at all is known as insulator. Clear? তাহলে কোন कहला जहां मध्ये दे इलेक्ट्रॉन पास कर दियो ताको दे कोन कंडक्टर. ताहले कोन लिखिबा substances through which electron can flow easily. Electron can flow easily is known as conductor. जहां मध्ये दे इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर दबा ताको कोन कह जे कंडक्टर. एग्जांपल हम जे कोनोसी मेटल जतक रहला सब नै परिबा मैग्नीशियम कॉपर एल्युमिनियम एटसेट्रा बुझिला. कौन कहला सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजीली जहां मध्ये दे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर दिबो दैट इज कंडक्टर. देखो कंडक्टर रो डायग्राम केन देखो दरा एट होती केला वैलेंस बैंड एट होती केला कंडक्शन बैंड. देखो मु कहितली तळटा होची वैलेंस बैंड उपरटा होची कंडक्शन बैंड. कोन कहितली तळटा होची कोन वैलेंस बैंड उपरटा होची कोन कंडक्शन बैंड. देखिलो एतरा कोन होइचंती जणे आउ जण को ऊपर चढ़ी जाइछंती बा कोन कहचे ओवरलैप हेचंती. तले हम केंति मन रखिया देखो इन कंडक्टर द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप टू ईच अदर. कोन ओवरलैप टू ईच अदर. इन कंडक्टर द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप टू ईच अदर इफ वी गिव कोन दबा स्लाइटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हमें कौन दबा if we give slightly electric potential across the two ends of the conductor the electrons are accelerated towards higher potential. इलेक्ट्रॉन माने कोन हेबे higher potential आड़ के अट्रैक्ट हेबे. ताले कोन कहली भल से बुझे चेष्टा करो. in conductor the valence band and conduction band are overlap to each other if we give कोन दबा slightly electric potential कोन दबा across the two ends of the conductor the electrons are accelerated towards कोन higher potential. इलेक्ट्रॉन माने कोन हेबे higher potential आड़ की अट्रैक्ट हेबे. बुझिला तो कौन कहली इन कंडक्टर द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप टू ईच अदर इफ वी गिव कोन दबा स्लाइटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोडी अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल. तब ये कोन कंटेन करे इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. कोन इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मनला इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मनला मु जोटा कहली सेटा लिखिबो बुझियला. तापर कोन if we increase the temperature of a conductor जदि हमें टेम्परेचर बढ़ाइबा ताले कोन हबो if we increase the temperature of a conductor its electrical conductivity decreases. कोन हे electrical conductivity decreases. conductivity electrical conductivity कोन हे decrease करते हैं so that the resistance resistivity increase करता है. भल से बुझे चेष्टा करो. ताले कंडक्टर हमें कोन कहले सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजीली जहां मध्ये दे इलेक्ट्रॉन फ्लो इजीली कर दिबो ताको कोन कहते कंडक्टर. मनला इन कंडक्टर द वैलेंस बाय इन एनर्जी लेवल डायग्राम बाय इन कंडक्टर एटा होची को डायग्राम एनर्जी लेवल डायग्राम द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप टू ईच अदर. कोन हेतांदी ओवरलैप हेगी रहतांदी. इन वैलेंस बैंड इन कंडक्टर द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप टू ईच अदर इफ वी गिव हमें कोन देबा स्लाइटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोड देबा across the two ends of the conductor is slightly electric potential दबा the electrons are accelerated towards higher potential. माने वैलेंस बॉन्ड रो कंडक्शन बैंड आडी की कोन हेबे आकर्षित हेबे द टुवर्ड्स कोन हबो हायर पोटेंशियल. the electrons are accelerated towards higher potential. तबरे इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. ये कोन कंटेन करे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. if we increase the temperature of a conductor जदि टेंपरेचर बढ़े its electrical conductivity decreases so that the resistance resistivity increases. That is all about conductor. जदि कार कोडी प्रॉब्लम अछि त पचार.
आसंता काली दे दवा केमिस्ट्री सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन काली दे दवा समस्त बुझे लगी तो समस्त बुझेला समस्त यस लिखि दियो जदि बुझेला यस लिखि दियो समस्त जदि कार को डाउट अछि ताल पचारो हाँ सब चैप्टर करवा व्यस्त होनी न्यूमेरिकल्स भी करवा ए वीक रे न्यूमेरिकल्स सब प्रैक्टिस करवा व्यस्त होनी ठीक अछि नेक्स्ट जीवा सेमीकंडक्टर देखो सेमीकंडक्टर आसला कोन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेमीकंडक्टर कोन म कहितली कंडक्टर रे इलेक्ट्रॉन ता इजीली फ्लो कर दिबो सेमीकंडक्टर कोन सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो पार्शियली माने अल्प मात्रा रे जीवो पार्शियली इज नोन एज सेमीकंडक्टर सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो पार्शियली इज नोन एज कोन सेमीकंडक्टर बुझला एग्जांपल आर हबो कोन जर्मेनियम and silicon germanium and silicon आरा डायग्राम टा करो देखो डायग्राम देखले तुम मन को ऑटोमेटिक लिख परिबो देखो इन सेमीकंडक्टर द वैलेंस बैंड इज फिल्डेड एंड द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी जहां डायग्राम में देखियो से लिखियो इन सेमीकंडक्टर वैलेंस बैंड इज फिल्डेड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी एंड द बैंड गैप इज वेरी स्मॉल बैंड गैप ता कोन बहुत स्मॉल दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मन आइला कोन कहली इन सेमीकंडक्टर द वैलेंस बैंड इज फिल्डेड द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी द बैंड गैप इज वेरी स्मॉल दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट in case of germanium case रे band gap होची 0.74 electron volt in case of silicon तो band gap is 1.19 electron volt बुझियला ऑब्जेक्टिव मन रखियो ऑब्जेक्टिव सह डिस्कशन हम करि दिबा कोन इन सेमीकंडक्टर द वैलेंस बैंड इज फिल्डेड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी द बैंड गैप इज वेरी स्मॉल दैट इज 1 electron volt in case of germanium the band gap is 0.74 electron volt in case of silicon the band gap is 1.19 electron volt से कौन कंटेन करथला लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ये कौन कौन करे इट contains partially free electron तापरे यार इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहा का भीतर रहता है कंडक्टर और इंसुलेटर भीतर रहता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहा का भीतर रहता है कंडक्टर और इंसुलेटर भीतर रहता है कौन लिखियो इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी lies in between conductor and insulator तालार इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहा का भीतर रहता है कंडक्टर और इंसुलेटर भीतर रहता है तापर आ गोटे लास्ट कोन मन रखो गोटे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कहूची at absolute zero temperature a semiconductor behaves as an insulator कोन कहली at absolute zero temperature
absolute zero temperature, a semiconductor behaves as an insulator. भले से बुझिया को चेष्टा कर देखो ताले हम आउथर कह दोची सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो पार्शियली जहां मध्ये दे इलेक्ट्रॉन पार्शियली फ्लो करे ताको कह जाय सेमीकंडक्टर एग्जांपल कोन जर्मेनियम और सिलिकॉन डायग्राम देखो इन सेमीकंडक्टर द वैलेंस बैंड इज filled and the conduction band is empty the band gap is very small that is 1 electron volt in case of germanium the band gap is 0.74 electron volt in case of silicon the band gap is 1.19 electron volt तापर से कोन कंटेंट करतला कंडक्टर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ये कोन कंटेंट करची पार्शियली फ्री इलेक्ट्रॉन तापर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहा का भीतर रहता है कंडक्टर और इन्सुलेटर भीतर रहता है कोन कंडक्टर और इन्सुलेटर भीतर रहते हैं at absolute zero temperature रे सेमीकंडक्टर कहा ले बिहेव करे इन्सुलेटर वाले बिहेव करे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रे यदि पचरिबो क्वेश्चन at absolute zero temperature जर्मेनियम बिहेव्स एज गैस तुम कोन लिखिबो इन्सुलेटर कारण जर्मेनियम और सिलिकॉन होची कोन सेमीकंडक्टर से यदि डायरेक्ट सेमीकंडक्टर न लिखि कि जर्मेनियम सिलिकॉन एग्जांपल देकी बुझेबो त तुम कोन लिखिबो जीरो at absolute zero temperature ए सिलिकॉन बिहेव्स एज कोन इन्सुलेटर बुझिले तापर देखो हम लिखि दोचा ଗୋଟେ पॉइंट लास्ट पॉइंट आमे कोन इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सेमीकंडक्टर यदि टेम्परेचर बढ़ेबा ताले कंडक्टिविटी कोन हबो बढ़िबो इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस so that the resistivity decreases resistivity कोन हबो डिक्रीज करिवो बुझिला ताले कोन हला if we increase the temperature of a conductor its electrical conductivity increases so that the resistivity decreases बुझिला very very important सेमीकंडक्टर टा बहुत इंपोर्टेंट जदी के कोडी न बुझि परला ताल मते पचार तापर हमारा टाइप्स पढिबा समस्त बुझिला कि हेलो हाँ राधे राधे आईटी लाइव क्लास हो करबा एटा बुझिला तो समस्त घर समस्त नोट्स करो नोट्स करके पढ़ो मन रहइबो ठीक है नेक्स्ट पे पढ़िबा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर types of semiconductor semiconductor is of two types one is the intrinsic semiconductor another is the extrinsic semiconductor बुझला मु सेटा डिफरेंशिएट करी बुझुची तुम बुझी परिबो intrinsic semiconductor SC माने semiconductor हैला
तापर आसला एक्सट्रिंसिक very very important. It is a pure semiconductor. Intrinsic कौन? It is a pure semiconductor. It is a pure semiconductor with no impurity. With no impurity. এটা হচ্ছে কোন পিওর সেমিকন্ডাক্টর যোউতরা কোন ইম্পিউরিটি নাই তাহলে এটা অপোজিট রে কোন হবে ইম্পিওর সেমিকন্ডাক্টর ডিজে ইম্পিওর সেমিকন্ডাক্টর উইথ ইম্পিউরিটিজ যোউতরা কোন থিবো ইম্পিউরিটিজ থিবো ফার্স্ট পয়েন্ট মনে হলা ইট ইজ এ পিওর সেমিকন্ডাক্টর উইথ নো ইম্পিউরিটি ইট ইজ এ ইম্পিওর সেমিকন্ডাক্টর উইথ ইম্পিউরিটিজ তার ইয়ার ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি লো ইটস ইলেকট্রিক্যাল conductivity is low conductivity is low তাহলে আর ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি কম হবে হাই হবে যেহেতু আর লো তার কোন হবে হাই হবে যদি আর ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি লো রেজিস্টিভিটি কম হবে হাই হবে ইটস রেজিস্টিভিটি ইজ হাই তাহলে আর রেজিস্টিভিটি কম হবে লো হবে বহুত সহজ তাহলে আমি কোন কইলি it is a pure semiconductor with no impurity it is a impure semiconductor its electrical conductivity is low its electrical conductivity is high its resistivity is high its resistivity is low its conductivity depends upon temperature only केवल टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे आर कंडक्टिविटी मन रख एटा कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ डोपिंग ताले कहा ऊपर डिपेंड करे टेम्परेचर अमाउंट ऑफ डोपिंग ए जो वाटर लगले डोपिंग का अर्थ म बुझाउची First one मन लेके it is a pure semiconductor with no impurity. It is a impure semiconductor. Its electrical conductivity low. Its electrical conductivity is high. Its resistivity is high. Its resistivity is low. Its conductivity depends upon temperature only. Its conductivity depends upon temperature and amount of doping. तमरा केमिस्ट्री गोटे चैप्टर थिला सॉलिड स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री से चैप्टर टा तमरा एबर्ष उठी जायछि कटि सेटा बुझिला से चैप्टर सब विभिन्न डिफेक्ट हम पढ़थांत स्कॉटकी डिफेक्ट फ्रेंकेल डिफेक्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आउट थाए हमर कोन कहलो सेटा इंप्योरिटी डिफेक्ट बुझिला तो इंप्योरिटी डिफेक्ट माने कोन कहलो सेतरा कोन होए फॉरेन एटम आसी कि किछि लागे होस्ट एटम आगर जगह रे धर गोटा होस्ट एटम रहिला ताकू उठे कि किछि फॉरेन एटम आसी कि ता जगह लागंती सेयोटा को डॉपिंग कहै दे जोटा तमर नाही तम खाली जानि थाओ बुझिला तो फॉरेन एटम को उठे होस्ट एटम को उठे कि फॉरेन एटम आसी कि ता प्लेस रे लागंती ताकू कहै डॉपिंग बुझिला ताले कोन ला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विथ डिफरेंस बुझे लगी इट इज ए प्योर सेमीकंडक्टर विथ नो इंप्योरिटी इट इज ए इंप्योर सेमीकंडक्टर इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो यार इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई यार रेजिस्टिविटी इज हाई रेजिस्टिविटी इज लो conductivity depends upon only temperature यार कोन conductivity depends upon temperature and also amount of doping बुझिला जदी कार को डाउट अछि न बुझि पल्ला तले मते पचार समस्या न बुझे लगी P type semiconductor N type semiconductor जानि चल ना कोन कोजो हां गुड इवनिंग समस्या न बुझे लगी ठीक अछि नेक्स्ट डिस्कशन करिबा डिफरेंस बिटवीन p टाइप एंड n टाइप सेमीकंडक्टर वेरी वेरी इंपोर्टेंट
एथर परीक्षा पई पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बहुत इंपोर्टेंट 3 मार्किया क्वेश्चन आसीबो तणु भलो से बुझ बुझला types of extrinsic semiconductor types of extrinsic semiconductor extrinsic semiconductor होची दी प्रकार गोटे होची p type गोटे होची n type semiconductor p type semiconductor n type semiconductor तले भले से बुझो एटा कोन सुना को तब लिखियो it is produced by doping trivalent impurity with pure semiconductor कोन it is produced by doping कौन doping करिवो trivalent impurity with pure semiconductor बुझेला अब ये कोन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी सेतर थिला ट्राइवैलेंट एतर आसीबो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी विथ प्योर सेमीकंडक्टर देखो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी माने कोन ट्राइवैलेंट माने वैलेंसी होची 3 विथ प्योर सेमीकंडक्टर के जर्मेनियम और सिलिकॉन तांको वैलेंसी केते 4 बस माने टेट्रा वैलेंसी शो करन के ताले कोन कहली हमर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी के कोन देखो इट इज प्रोड्यूस्ड केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी विथ प्योर सेमीकंडक्टर ट्राइवैलेंट माने जार वैलेंसी 3 इंप्योरिटी विथ प्योर सेमीकंडक्टर माने जार वैलेंसी होची 4 बा जोटा जर्मेनियम और सिलिकॉन से दिटा होची हमर प्योर सेमीकंडक्टर तांकर वैलेंसी केते 4 तेनु 3 युक्त 4 से माने 7 एपड बुझो एपड कोन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग पेंटावैलेंट माने कोन पेंटा माने 5 with pure semiconductor की हमर जर्मेनियम और सिलिकॉन तांका वैलेंसी केते 4 ताले 5 रे 9 बुझिला गो एटा ला ट्राइवैलेंट विथ प्योर सेमीकंडक्टर इट इज पेंटावैलेंट विथ प्योर सेमीकंडक्टर एटा काहे कि लेकिन 3 युक्त 4 7 एटा 5 युक्त 4 9 सेटा कहूची तापर देखो p टाइप रे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के होल्स तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन p टाइप सेमीकंडक्टर आर होल्स मेजॉरिटी एथरे के होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एथरे के इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एथरे के इलेक्ट्रॉन्स बुझिला द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन p टाइप सेमीकंडक्टर आर होल्स द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन p टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन्स सेंटे n टाइप रे कोन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के n टाइप रे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हला आर उल्टाटा मेजॉरिटी हला इलेक्ट्रॉन्स अब माइनॉरिटी हला होल्स तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन n टाइप सेमीकंडक्टर आर होल्स गोटे पट मन रखिले आर पट मन रही जो देखो द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन p टाइप सेमीकंडक्टर आर होल्स p फॉर पॉजिटिव माने होल्स माइनॉरिटी माने नेगेटिव बुझिला तो द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होची कोन इलेक्ट्रॉन्स बुझिला तो तले एपटे मेजॉरिटी के इलेक्ट्रॉन बुझि पाइलाटी m फॉर नेगेटिव माने इलेक्ट्रॉन so माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के होल्स बुझिला तो तले कोन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी विथ प्योर सेमीकंडक्टर माने ट्राइवैलेंट माने 3 वैलेंसी प्योर सेमीकंडक्टर माने वैलेंसी 4 3 युक्त 4 समान 7 एपटे 5 युक्त 4 समान 9 ताल तीनटा पॉइंट बुझि पाइलो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी विथ प्योर सेमीकंडक्टर इन p टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर होल्स इन p टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स सेंटर उल्टा लिखिबो तापर देखो यार होची 3 युक्त 4 समान 7 माने ऑक्टेट पूरा करिया पे माने हम जो पढ़छे ऑक्टेट माने 8 ताले ये गोटिए दरकार करछि ना गोटे आवश्यक जो डोनेट करछि कोडा हबो गोटे अधिक पाखे अच्छी ना गोटे कम अच्छी देख 7 अच्छी से गोटे आनिले 8 हबो बा ऑक्टेट पूरा नबो कोन अच्छी 7 अच्छी त माने गोटे दरकार करछि बा एक्सेप्ट करबो ये जदि गोटे एक्सेप्ट कर दबो इलेक्ट्रॉन ताले कोन हे जिवो 8 हे जिवो बा कंप्लीट ऑक्टेट कर दबो ताले यार होची एक्सेप्टर एनर्जी लेवल ताले एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कोड अछि द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल is just above the valence band
देखो यार कौन छी 5 युक्त 4 9 हमर ऑक्टेट में केते दरकार 8 त माने ये गोटे कोन करिवो दान करिवो बा डोनेट करिवो ताली ये डोनेट करिवो त माने ये डोनर द डोनर एनर्जी लेवल is just below the conduction band, below the conduction band बुझिला एतरे कोन थाए एक्सेप्टर एनर्जी लेवल थाए कारण ये गोटे एक्सेप्ट कले ऑक्टेट पूर्ण होबो त एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड कोड अछि वैलेंस बैंड ठीक ऊपर को अछि डोनर ये कोन करिवो गोटे दान करिवो त माने गोटे डोनेट करिवो द डोनर एनर्जी लेवल इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड डोनर एनर्जी लेवल ता कोड अछि कंडक्शन बैंड ठीक तळको अछि बुझिला यार एग्जांपल होची मनक वेरी वेरी इंपोर्टेंट गैलियम इंडियम तापर कोन हमर गैलियम इंडियम बोरॉन यार एग्जांपल मनक आर्सेनिक एंटीमनी फास्फोरस बिस्मथ एंटीमनी माने एसबीएस टीबीएम बुझिला तो आर्सेनिक एंटीमनी फास्फोरस बिस्मथ बुझिला तर कोन कहली यार होची गैलियम एल्युमिनियम इंडियम बोरॉन यार होची आर्सेनिक एंटीमनी फास्फोरस बिस्मथ परीक्षा रे केमिति क्वेश्चन आसे देखो केमिति क्वेश्चन आसीबो p टाइप सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग डैश एलिमेंट विथ कोन जर्मेनियम ऑप्शन ए देइथो गैलियम आर्सेनिक एंटीमनी फास्फोरस तमे जानछो कोटा भितर ट्राई गेले गैलियम ताला आंसर होबा गैलियम या भितर जे कोन से एग्जांपल भी कंफ्यूज द एग्जांपल ऑफ p टाइप सेमीकंडक्टर इज डैश ऑप्शन देइथो आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ बोरॉन कोटा होबा बोरॉन बुझि पाइला ऑब्जेक्टिव भितर कोन आसे ताले p टाइप n टाइप ए वर्ष परीक्षा पई 2025 बोर्ड एग्जाम पई बहुत इंपोर्टेंट एटा 3 मार्क क्वेश्चन आसीबो तेनु जदी के कोठी न बुझि पाला ताले पचार समस्त बुझे लगी हाँ ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवा तापरे इंसुलेटर कोन सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रॉन कैन नेवर फ्लो एट ऑल એટલે इंसुलेटर substances through which electron can flow never at all is called insulator जहां मध्य दे इलेक्ट्रॉन टोटली फ्लो कर परिबनी ताको कोन कहै छै इंसुलेटर कहै छै एग्जांपल कोन हबा रबर
wood etc. काठ रबर ये सब हम कौन इन्सुलेटर एग्जांपल देखो इन्सुलेटर कौन होता है से बैलेंस बैंड फिल्डेड कंडक्शन बैंड एम्प्टी किंतु बैंड गैप टा बहुत बड़ थाए दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन लिखिबो इन इंसुलेटर the valence band is filled the conduction band is empty the band gap is very large that is 3 electron volt so it is quite difficult for the electron to jump to the higher potential बुझिला त माने कोन म कहू सुना in insulator the valence band is filled valence band filled है conduction band कौन थाए खाली ही थाए बुझिला तो in valence band in insulator the valence band is filled and the conduction band is empty the band gap is very large that is 3 electron volt बुझिला तो band gap is बहुत large that is 3 electron volt बुझिला so it is quite difficult but it is quite impossible for the electron to jump to the higher potential जदी गोटे धरो गोटे तमे गोटे रास्ता रे जाउछ सेठी गोटे खाल अछि ता भीतर जदी डिस्टेंस ता कम थिबो एपट रास्ता सेपट रास्ता भीतर जो खालटा अछि ता डिस्टेंस कम थिबो तमे आराम रे डेइ पड़िबो जदी डिस्टेंस अधिक थिबो तमे डेइ परिबो तमे बे डिफिकल्ट हो एठी भी छैया तांग भीतर जो लार्ज बैंड गैप अछि सेति पे इलेक्ट्रॉन को लोअर पोटेंशियल रो हायर पोटेंशियल को जिया पे कष्ट होय बुझिला ये थिला इन्सुलेटर बुझिला तो तापर आसिला हमर कोन है हमर आसिला फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग का अंडर रे जीवो पीएन जंक्शन डायोड अंडर रे जीवो पीएन जंक्शन डायोड का को जे पीएन जंक्शन डायोड माने कोन व्हेन p टाइप सेमीकंडक्टर एंड n टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट टू ईच अदर जेतले इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट रे आसीबे ताले सेतले कोन फॉर्म हबो पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म हबो ताले केतले फॉर्म हबो जेतले p टाइप सेमीकंडक्टर और n टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट रे आसीबे इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट रे आसले कोन फॉर्म हबो पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म हबो बुझिला एबे हम डिस्कशन करबा फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग वेरी वेरी इंपोर्टेंट 3 मार्क के क्वेश्चन परीक्षा पई फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग तापर आसला रेक्टिफायर एतिकरे चैप्टर टा क्लोज हो forward and reverse biasing forward biasing kono when positive terminal of the battery is connected to the p side and negative terminal of the battery is connected to the n side then the whole system behaves as forward biased kon कहली when battery ro दी पट side अछि one is positive terminal another is negative not terminal तले कोन जेतले positive terminal of the battery is connected to the p side and negative terminal of the battery is connected to the n side then the whole system behaves as forward biased बुझला reverse bias रे उल्टा when positive terminal of the battery is connected to the n side and negative terminal of the battery is connected to the p side then the whole system behaves as reverse biased बुझियला clear when positive terminal of the battery धर मैले गोटे बैटरी करिवि तार गोटे पट होची कोन positive आउट होची negative when positive terminal of the battery is connected to p side negative terminal of the battery is connected to the n side then the whole system behaves as forward biased when negative terminal of the when positive terminal of the battery is connected to the n side and negative terminal of the battery is connected to the p side then the whole system behaves as reverse biased तापरे it provides low resistance path to current flow ये कौन देता है low resistance path to current flow it provides low resistance path to current flow ये कौन प्रोवाइड करे high resistance path to current flow कौन it provides low resistance path to current flow it provides high resistance path to current flow the current in the junction is known as forward current the current in the junction is known as forward current tale the current in the junction is known as reverse current it provides forward resistance it provides reverse resistance अब एतरे जो वोल्टेज प्रोड्यूस है ताको कह जे इट प्रोड्यूसेस नी वोल्टेज वेरी वेरी इंपोर्टेंट इट प्रोड्यूसेस नी वोल्टेज इट प्रोड्यूसेस ब्रेक डाउन वोल्टेज
तापरे इट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर माने फॉरवर्ड बायसिंग करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यार कौन हो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो माउथ टे कह दोछि देखो when positive terminal of the battery is connected to the p side and negative terminal of the battery is connected to the n side then the whole system behaves as forward bias so तत्र उल्टा टा positive टा n side negative टा p side it provides lower resistance path to current flow it provides high resistance path to current flow the current in the junction is known as forward current the current in the junction is known as reverse current तापरे it provides forward resistance it provides reverse resistance it produces knee voltage it produces breakdown voltage it is due to the forward biasing current is due to majority charge carrier the reverse biasing current due to minority charge carrier very easy point भलो से पढ़ो नोट करो जदी के को स्टेप रे न बुझी वाला पचारो या पर हम रेक्टिफायर बुझेबा क्लोज करबा इलेक्ट्रॉनिक्स तापर आरंभ करबा न्यूक्लियर फिजिक्स समस्त बुझे लगी साउंड आसुनी क्लियर केमिस्ट्री हम केमिस्ट्री की भय कले हेनी अल्प अल्प जहाँ जी पार्छ से पढ़ पढ़ केमिस्ट्री जहाँ जो डाउट हम पचार किसी असुविधा ना मुझे सिलेक्टिव क्वेश्चन जी प्राक्ट कर भलसे स्मार्टली पढ़ बुझिपार बड़ दलिया घोषिले हेनी स्मार्टली पढ़ मन रहा स्मार्ट वर्क विथ हार्ड वर्क रही सक्सेस मिल बुझेगा तेणु केमिस्ट्री समस्त भाव भय बहुत गुड़े रिएक्शन अच्छे ऑर्गेनिक आम कर भावीदेल कर किसी जब कह सब कर बुझिपार तो हार्ड वर्क लेबर स्मार्ट वर्क बुझिपार तो सब मन रखी था निजी सब डीएसएस मोड रे रख डीएसएस मोड मीन्स डिसिप्लिन सैक्रिफाइस सिंसियरिटी ये तीनटा मोड जो एक्टिव रखिबो से सक्सेस पाई पाइबो सब डिसिप्लिन रे रहइबो सैक्रिफाइस करथबो और सिंसियरिटी रहथबो ताहाले ही से सक्सेस पाई परिबो बुझिला हाँ कल केमिस्ट्री इंपोर्टेंट दिया जीवो कल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक डिस्कशन करबा हाँ ठीक अच्छे आम पढ़े रेक्टिफायर
एबे आसला रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या कह जाए जी कन्वर्ट करे कहा को कोदरे कन्वर्ट करिवो कन्वर्ट कहा करिवो इनपुट एसी टू आउटपुट डीसी जी इनपुट एसी को आउटपुट डीसी रे कन्वर्ट करिवो ताको कह जाए रेक्टिफायर। एसी माने एयर कंडीशनर नो अल्टरनेटिव करंट डीसी माने डायरेक्ट करंट बुझियला जी इनपुट एसी को आउटपुट डीसी रे कन्वर्ट करे ताको कह जाए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर होची दी प्रकार गोटे होची हाफ वेव रेक्टिफायर आउट अछि फुल वेव रेक्टिफायर आउट कोन फुल वेव रेक्टिफायर ए वर्ष पे फुल वेव रेक्टिफायर इंपोर्टेंट नो लॉन्ग क्वेश्चन पे बुझियला खाली ऑब्जेक्टिव पे ताको मन रखतो इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जदी कहबो फिजिक्स रो मुख्य तीनोटी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होची पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इट्स लॉज एंड आइंस्टाइन इक्वेशन एंड किर्चॉफ्स लॉ वीस्टन ब्रिज ए तीनटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट ए वर्ष एग्जाम पे 2025 बोर्ड एग्जाम पे बुझियला देखो हाफ वेव रेक्टिफायर का कहे व्हिच कन्वर्ट्स only positive half cycle of input AC को आउटपुट DC जे केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी को आउटपुट डीसी रे कन्वर्ट करे ताको कह जे हाफ वेव रेक्टिफायर जे बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल को कोन करे पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी को आउटपुट डीसी रे कन्वर्ट करे ताको कोन कह जे फुल वेव रेक्टिफायर जेंति कहौ जे हाफ प्लेट बिरियानी फुल प्लेट बिरियानी सेंटा टाइप रो हाफ वेव रेक्टिफायर कोन इट इज ए कोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट only positive half cycle of input AC to output DC full wave rectifier kono it is a kono electronic device which converts both positive and negative half cycle of input AC to output DC एतिरे गोटिए डायोड यूज हुए गोटिए पीएन जंक्शन डायोड एतिरे दुईटा पीएन जंक्शन डायोड यूज हुए बुझिला तो गोटिए पीएन जंक्शन डायोड एतिरे दुईटा पीएन जंक्शन डायोड यूज हुए यार एफिशिएंसी मन रखिबो ऑब्जेक्टिव पई कह दोची यार एफिशिएंसी होची 40.6% यार एफिशिएंसी होची 81.2% बुझिला तो ताले एति के जानि थाओ हाफ वेव रेक्टिफायर कोन जे पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी को आउटपुट डीसी रे कन्वर्ट करे दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर जे बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी को आउटपुट डीसी रे कन्वर्ट करे ताको कहे फुल वेव रेक्टिफायर तापरे एतरे गोटे डायोड कनेक्शन हेते एतरे दुईटा डायोड कनेक्शन डायोड माने पीएन जंक्शन डायोड बुझिला यार एफिशिएंसी होची 40.6% आर एफिशिएंसी होची 81.2% हमर एठी ओवर हैला इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर बुझिला जदी आरंभ रु ए पर्यंत बुझिला बैलेंस बेंटारो कोन रेक्टिफायर पर्यंत जहार कोरोसी जगह रे डाउट अछि ताले पचारि पारो एबे हम स्टार्ट करबे न्यूक्लियर फिजिक्स आ भीतर जदी कहार कोन डाउट अछि ताले पचारि पारो न्यूक्लियर फिजिक्स रो बहुत अल्प क्वेश्चन अछि आ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन क्वेश्चन पढिबे मु डिस्कशन कर देबी तेनो या भीतर जदी कहार कोन डाउट अछि ताले से माने पचारि पारो समस्या हमर बुझे लगी ना कार कोडी प्रॉब्लम अछि जाना समस्या हमर बुझे लगी यदि बुझेले समस्या यस कह दियो
फिजिक्स रे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होची पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, किर्चॉफ्स लॉ, व्हिटस्टोन ब्रिज, फोटो व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन इक्वेशन विथ लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ए तीनटा कंबाइन करी पकेओ। ए तीनटा बेसी इंपोर्टेंट अछि। ता माने न हो तुम अलगा गुडा छाडी दबो, अलगा गुडा भी प्रैक्टिस करो, किंतु ए तीनटा को विशेष ध्यान देइतो, बुझिला। हो ठीक अछि, एबे न्यूक्लियर फिजिक्स डिस्कशन आरंभ करबे। न्यूक्लियर फिजिक्स माने एक न्यूक्लियर फिजिक्स माने हम कहा ऊपर पढ़िबा, न्यूक्लियस ऊपर पढ़िबा। क्वेश्चन को जीवा पूर्व मु तुमको किछि बेसिक कह दोची, तुम आगे भलसे बुझ। एटा हला एटम। कोन एटा एटम। एटम रो सेंटर के रहिला, that is nucleus। nucleus कौन कहली, न्यूक्लियस का कौन दले तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भीतर के रहिले प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कौन रहिले प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहिले। ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कौन कहा जाए न्यूक्लियॉन्स। कौन कहा जाए न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस नो न्यूक्लियॉन्स। आ इलेक्ट्रॉन कौन करले कहा चारिपटे घुरिले, इलेक्ट्रॉन एंड घुरुचंती डायरेक्शन देते जानि परिबो। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस, जहा को हम कोन कहूचे ऑर्बिट बा सेल कहूचे। कोन कहूचे ऑर्बिट बा सेल। तले कांसेप्ट बुझे लागी, गोटे एटम रहिला, एटम रो सेंट्रल पार्ट को कोन कहले हमें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भीतर के रहिली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जहा को कहै जाय न्यूक्लियॉन्स। आ इलेक्ट्रॉन कोन हला तांकर चारिपटे घुरला, न्यूक्लियस चारिपटे घुरला। ताले न्यूक्लियस भीतर के रहिले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ताको कोन कहै जाय न्यूक्लियॉन्स। आ इलेक्ट्रॉन माने कोन करंती ता चारि पाखे घुरंती, बुझियला तो। ये थिला बेसिक। एटम कोन, एटम सेंटर रे कोन रहिला न्यूक्लियस रहिला। न्यूक्लियस भीतर के रहिला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ताको कोन कहै जाय न्यूक्लियॉन्स। आ इलेक्ट्रॉन कोन करछन ता चारि पाखे घुरछन, बुझियला। एबे फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें पढिबा, जोटा परीक्षा पे बहुत इंपोर्टेंट। व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स, राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आ बहुत सहज मध्ये संगे संगे मन रहिबो, मन रहि जिवो तुम जदी भले से सुनिबो। न्यूक्लियर फोर्स, व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट attractive interaction acting between the nucleons is known as nuclear force। कौन कहली द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, सबुठारु स्ट्रॉन्गेस्ट और अट्रैक्टिव माने आकर्षण, बुझियला तो। द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव इंटरेक्शन कहा कहा भीतर एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस माने कोन, मु कहली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कोन कह जाय न्यूक्लियंस कह जाय। तले कोन कहला
the strongest attractive interaction acting between the nucleons is known as nuclear force. Clear? कौन कहली? the strongest attractive interaction acting between the nucleons is known as nuclear force. तर प्रॉपर्टीज हम पढ़िबा एटा 3 मार्क के क्वेश्चन प्राय परीक्षा रे क्वेश्चन आसे प्रॉपर्टीज कौन एटा इट इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मु शॉर्ट लिखि दोची तमे ताको मन रखियो इट इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर attractive force it is a attractive force it is a short range force charge independent spin dependent it is a charge independent force it is a charge independent force spin dependent force spin dependent force non central force non conservative force very very important बहुत सहज आराम रे मन रही जो तुम जदी भल से सुनियो मन देखि ताले बुझि जीवो ताले कोन कहली it is a strongest force in nature attractive force short range force कोन कहली strongest force in nature attractive force short range force charge independent spin dependent charge independent spin dependent बुझला non central non conservative कौन कहली non central non conservative ताले nuclear force कोन the strongest attractive interaction acting between the nucleons is known as कोन nuclear force तार properties कोन it is the strongest force in nature it is a attractive force it is a short range force charge independent spin dependent non central non conservative force बुझिला जदि कार कोन डाउट अछि भीतर मत पचारो समस्त बुझे लगी समस्त डाउट क्लियर हो लगी ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की दिबा Then asla mass defect very very important 2 mark question mass defect what is mass defect it is the difference between constituent nucleons and nuclear mass कौन कहली it is the difference between constituent nucleons and nuclear mass लिखुची बुझे दोची it is the difference between constituent बारंबार कहूँ न्यूक्लियस भीतर डिफरेंस सब मन रखियो इट इज द डिफरेंस बिटवीन constituent nucleons and nuclear mass mathematically it is denoted by del m it is denoted by del m ना फार्मूला कौन हबो देखो भल से बुझियो चेष्टा करो it is the difference between constituent nucleons माने के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ZMP plus NMN minus M where M is nuclear force sorry nuclear mass देखो आउथरे भल से बुझौछि देखो इट इज द डिफरेंस बिटवीन constituent nucleons and nuclear mass constituent माने एकाठी होबा ए जो प्लस चिन्ह देछि constituent माने कोन एकाठी होबा
न्यूक्लियस माने मास ऑफ ए देखो जेड माने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एन माने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमपी माने मेंबर ऑफ एलिमेंट नो कि मेंटल पेशेंट नो एमपी माने कौन हो मास ऑफ प्रोटॉन एमएन माने मैंगनीज नो मास ऑफ न्यूट्रॉन बुझिला एमपी माने मास ऑफ प्रोटॉन एमएन माने मास ऑफ न्यूट्रॉन जेड माने नंबर ऑफ प्रोटॉन एन माने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कॉन्स्टिट्यूएंट माने एकाठी करबा आ डिफरेंस माने कोन ताको माइनस करबा इट इज द डिफरेंस बिटवीन का भीतर कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मास कोन कहली इट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मास बुझिला हाथ को मूवमेंट को लक्ष्य करो इट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मास बुझिला एम टा होची न्यूक्लियर मास दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट तब आसला पैकिंग फ्रैक्शन Packing fraction क्या कहते हैं? It is defined as the ratio between mass defect per mass number. कौन? Mass defect per mass number. Per mass number. It is defined as the ratio between. It is defined as the ratio between कौन? Mass defect per mass number by del m divided by a. Del m जगह तुम कौन पके परियो? ये total टा पके परियो बुझिला? तले packing fraction कौन? It is defined as the ratio between mass defect and mass number that means del m by a तले mass defect कोन packing fraction को बुझिलो जदी की कोडी न बुझ पले तले पचारो तापर इंपोर्टेंट पढिया में बाइंडिंग एनर्जी समस्त हमर बुझिला की जदी बुझिला तले यस कह दियो जो समस्त बुझिले यस कह दियो एनी डाउट अप टू दिस ठीक अछि नेक्स्ट आमे जिबा बाइंडिंग एनर्जी देखो गोटा को बुझौचे को भलसे बुझ धर दीटा जिनस मिसिबो गोटे बड़ जिनस तैयारी हबो बा गोटे बड़ जिनस भांगीबो दीटा छोट जिनस तैयारी हबो सेथु बुझेला दीटा जिनस को एकाठी करी हम गोटे जिनस पाइबा गोटे जिनस को भांगी के हम दीटा जिनस पाइबा दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी भलसे बुझार चेष्टा करो बाइंडिंग एनर्जी कोन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाउंड मींस एकाठी करिबा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन धर एटाला प्रोटॉन आ एटाला न्यूट्रॉन एटाला न्यूक्लियस एटा भी न्यूक्लियस तले कोन कहली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाउंड माने एटा फास्ट रे बाउंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टू फॉर्म ए न्यूक्लियस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी माने केते अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार होची प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एकाठी करके न्यूक्लियस टे फॉर्म करिया पई दैट इज कॉल्ड कोन बाइंडिंग एनर्जी आउ बाइंडिंग एनर्जी केंते कहबो the amount of energy released when a nucleus break into constituent protons and neutrons and to separate them in such a large distance that may not be interact with each other that means mo kon कहली केते amount of energy release होची गोटे न्यूक्लियस को भांगी की ताको constituent proton neutron करिया पई आ ताको एमिति भाबे अलग करबा जहा द्वारा से माने परस्पर सहित एक रही परिबे ना बुझला एटा हला तार थ्योरी माने गोटे केते एनर्जी दरकार होची से मास को एकाडी करी न्यूक्लियस टे फॉर्म करिया पे
ता केते एनर्जी दरकार रिलीज हबो जेतले से माने भांगी की तांको कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एकड करिया पे बुझियला तो दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी मु लिखि दोचे एटा नोट कर दियो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दा the amount of energy required to bound proton and neutron to form nucleus is called binding energy. Bao kono the amount of energy required सर सेटा बाळे रिलीज कर देतली amount of energy required केते amount of energy दरकार होचे एकाडी करिया पे और सेमान को भांगिया पे the amount of energy required to break a nucleus into its constituent protons and neutrons and to separate them in such a large distance that they may not be interact with each other मैं आउथरे बुझे दोछि be interact with each other याको केमने डिनोट करा हुई b जगह रे b आकार रे डिनोट करे b इक्वल टू del m into c square c माने कोन वेलोसिटी ऑफ लाइट del m माने कोन मास डिफेक्ट b माने बाइंडिंग एनर्जी del m c square फार्मूला टा मन रखियो b इक्वल टू del m c square तले मु कोन कहली the amount of energy required कोन भाई to bound proton and neutron to form a nucleus टे फॉर्म करिया पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाउंड करी न्यूक्लियस टे फॉर्म करिया पे जति के एनर्जी दरकार ता कजे बाइंडिंग एनर्जी नहले कोन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार होची कोन पे टू ब्रेक ए न्यूक्लियस को भांगी की इनटू इट्स कांस्टीट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड टू सेपरेट देम माने सेमान को अलग करबा इन सच ए लार्ज डिस्टेंस हमको लार्ज डिस्टेंस से अलग करबा दैट दे आर मे नॉट बी इंटरैक्ट विथ ईच अदर दादर से माने परस्पर सहित इंटरैक्ट हे परिबे ना बुझियला जदि कहार की को स्टेप न बुझ पले तल पचारो आपर आ दुईटा क्वेश्चन रहला न्यूक्लियर फ्यूजन और आइसोटोप इतिग्रे चैप्टर टा क्लोज हो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब बुझियला देखो जदि कहार को न बुझ पछो तल पचारो समस्त बुझेला जदि यस कह दियो ठीक अछि नेक्स्ट डिस्कशन करबा नेक्स्ट असला न्यूक्लियर फिजन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन
फिजन न्यूक्लियर फ्यूजन मैं डायग्राम कर बुझे दूची तुम बुझ देखो बोल से बुझो इट इज ए प्रोसेस इन व्हिच ए हेवी न्यूक्लियस एटा होच कोनटा न्यूक्लियसटा ए हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट हे कोन हुए लाइटर न्यूक्ली माने हल्का न्यूक्ली हे जाय कोन इन दिस प्रोसेस it is a process in which a heavy nucleus split into lighter nuclei and release some energy माने गोटे बड़ न्यूक्लियस टे भांगी के छोट छोट न्यूक्ली दबो किछ एनर्जी रिलीज करबो आ एतरे कोन लाइटर न्यूक्ली कंबाइन टू फॉर्म ए हेवी न्यूक्लियस एंड रिलीज सम एनर्जी माने लाइटर न्यूक्ली माने हल्का न्यूक्ली एकाठी की गोटे हेवी न्यूक्लियस फॉर्म करबे किछ एनर्जी रिलीज करबे दैट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन बुझला कोन फिर शॉर्ट लिख दोची कोन हबो हेवी न्यूक्लियस split into lighter nuclei and release some energy एतरे कोन lighter nuclei combine to form heavy nucleus and release some energy बुझिला कोन कहली एतरे गोटे हेवी न्यूक्लियस भांगी के स्प्लिट हे की कोन दबा लाइटर न्यूक्लियस दबा किछ एनर्जी रिलीज करिवो एतरे लाइटर न्यूक्लियस एकाठी हे की गोटे हेवी न्यूक्लियस फॉर्म करिवो किछ एनर्जी रिलीज करिवो तापर एतरे एनर्जी पर ग्राम इज लेस एनर्जी पर ग्राम is less कहला एनर्जी पर ग्राम इज लेस यार एनर्जी पर ग्राम इज मोर तबरे फिजनेबल फ्यूल्स आर लिमिटेड एंड चीप सॉरी लिमिटेड एंड एक्सपेंसिव फ्यूल्स आर लिमिटेड एंड चीप इतर कौन नॉट लिमिटेड एंड एक्सपेंसिव लिमिटेड एंड एक्सपेंसिव नॉट लिमिटेड एंड चीप यार इट्स प्रोडक्ट्स आर harmful आर होज प्रोडक्ट्स आर हार्मलेस अरे एति की मन को बोलसे कोन कहली हेवी न्यूक्लियस भांगी की लाइटर न्यूक्ली दबा किछ एनर्जी रिलीज करबो लाइटर न्यूक्ली एकाठी हे की हेवी न्यूक्लियस फॉर्म करबो किछ एनर्जी रिलीज करबो बुझियला तो तापर एनर्जी पर ग्राम इज लेस एनर्जी पर ग्राम इज मोर एपट कोन फिजनेबल फ्यूल्स आर लिमिटेड एंड एक्सपेंसिव बहुत कम मात्रा रे बा रेयर मात्रा रे अछंदी सेति में माने अधिक दामी माने अधिक मात्रा अछंदी नॉन लिमिटेड सेति में माने सस्ता चीप इट्स प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल एंको प्रोडक्ट आर हार्मफुल एंको प्रोडक्ट आर हार्मलेस नोट कर दियो एग्जांपल दे दियो एटम बम हाइड्रोजन बम यार एग्जांपल होची एटम बम आर एग्जांपल होची हाइड्रोजन बम वेरी वेरी इंपोर्टेंट तले कोन कहला फास्ट तार डेफिनेशन लिखिबो हेवी न्यूक्लियस भांगी की लाइटर न्यूक्ली दबो लाइटर न्यूक्ली एकाठी है कि हेवी न्यूक्लियस फॉर्म करिवो एनर्जी पर ग्राम इज लेस एनर्जी पर ग्राम इज मोर फिजनेबल फ्यूल्स आर लिमिटेड एंड एक्सपेंसिव बहुत कम मात्रा अछि लिमिटेड तो एक्सपेंसिव
एमाने अधिक मात्रा अछन नॉट लिमिटेड तेनु चीप सस्ता तापर इस प्रोडक्ट आर हार्मफुल आगो प्रोडक्ट आर हार्मफुल आगो प्रोडक्ट आर हार्मलेस एग्जांपल दे दो एटम बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब बुझिला नोट कर दियो जदि कार कोडी डाउट अछि ताले पचारो समस्त मन बुझे लगी यदि बुझे लगे यस कह दियो लास्ट क्वेश्चन टा डिस्कशन करबा तो समस्त बुझे लगे यस कह दियो समस्त बुझे लगी ठीक अच्छे लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करबा असला आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन वेरी इंपोर्टेंट 2 मार्किया क्वेश्चन पड़े 3 मार्किया क्वेश्चन भी बड़े बड़े पड़े आइसोटोप कहा को जे न्यूक्ली हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर जार कोन थिबो सेम एटॉमिक नंबर थिबो सेम एटॉमिक नंबर आ कोन थिबो डिफरेंट मास नंबर कोन थिबो डिफरेंट मास नंबर थिबो ताल ताको कोन कहबा आइसोटोप कहिबा एग्जांपल लेले बुझी परिबो हाइड्रोजन रो केतरा आइसोटोप अछि तीनोटी आइसोटोप अछि वन इज प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम देखो देखो एटॉमिक नंबर टा सबले कोन रखिबो तळे रखिबो बुझिला तो मास नंबर टा कोन रखिबो ऊपर रखिबो हमर कोन हम पढली एटॉमिक नंबर सेम थिबो समस्तंकर 1 रहिला मास नंबर यार 1 2 3 बुझिला तो एटॉमिक नंबर सेम थाए कि मास नंबर डिफरेंस हेले ताकू कह जाय कोन आइसोटोप फर्स्ट आइसोटोप हाइड्रोजन फर्स्ट आइसोटोप ना कोन प्रोटियम सेकंड आइसोटोप ना कोन ड्यूटेरियम थर्ड आइसोटोप ना कोन ट्राइटियम बुझियला तले सेम एटॉमिक नंबर देखो 1 1 1 सेम अछि मास नंबर 1 2 3 डिफरेंस दैट इज आइसोटोप आइसोबार कोन यार ठीक उल्टाटा आइसोबार कोन सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर कोन डिफरेंट एटॉमिक नंबर यार सेम मास नंबर थिबो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर थिबो एग्जांपल देखे कार्बन हमर होची धर लिखिबा 6 14
नाइट्रोजन नो 14 7 देखिला एटॉमिक नंबर एटी 6 अछि एटी 7 अछि किंतु मास नंबर केते यार 14 तार 14 अछि ताले मास नंबर जो सेम रहला दैट इज आइसोबार बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एटी 6 एटी 7 एटी कोन होतला मास नंबर सेम रहत मास नंबर डिफरेंट रहतला एटॉमिक नंबर सेम रहतला एटी कोन एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहबो मास नंबर सेम रहबो दैट इज आइसोबार आइसोटोन कोन जोथिरे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थिबो कोन थिबो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थिबो न्यूट्रॉन केमती बाहरे न्यूट्रॉन केमती बाहरे मास नंबर रु एटॉमिक नंबर फेडिले बा माइनस करले हम कोन पाइबा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाइबा देखो मु करछि धर मु लिथियम रो करबी लिथियम रो होची मास नंबर 7 एटॉमिक नंबर 4 ताले अंकर न्यूट्रॉन केते 7 4 इक्वल टू 3 बुझिला तो ए सॉरी 7 4 इक्वल टू 3 ठीक अछि एटा नबा ने ऑनलाइन एग्जांपल लेके हम बुझौजी तुम जोटा सहज हो देखो ए हाइड्रोजन एग्जांपल नबा देखो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मा बुद्धिटा कर दोची तुम बुझी परिबो देखो धरो मोड ऑक्सीजन नेली ऑक्सीजन ना एटॉमिक नंबर केते 8 मास नंबर केते 16 ताले तर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन केन देबो 16 - 8 समान 8 कोन हबो ताले नंबर ऑफ एतरे प्रोटॉन केतरा प्रोटॉन 8टी इलेक्ट्रॉन 8टी न्यूट्रॉन 8टी ताले कोन प्रोटॉन इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 8 न्यूट्रॉन इक्वल टू 8 हां 8 16 रो 8 गले केते हबो 16 - 8 समान 8 दुईटा एलिमेंट नेले जानि हबो देखिलो ताले ऑक्सीजन कोन हला एतरे जानि पहिला प्रोटॉन कोन इलेक्ट्रॉन कोन न्यूट्रॉन कोन जानलो आइसोटोन कोन देखो आइसोटोन एग्जांपल नउची लिथियम देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एटॉमिक नंबर 3 मास नंबर केते 7 ताले आरो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन केते 7 रु 3 गले 4 सेंदी बेरिलियम नबा बेरिलियम रो एटॉमिक नंबर केते 4 मास नंबर केते 8 8 - 4 इक्वल टू 4 ताले एतरे चारटा न्यूट्रॉन एतरे भी चारटा न्यूट्रॉन बुझिला लिथियम एटॉमिक नंबर 3 मास नंबर 7 7 रु 3 गले 4 सेंदी बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर 8 8 रु 4 गले 4 इट इज ऑल अबाउट आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन आइसोटोप रे सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर आइसोबार रे सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट आइसोटोन रे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहले ता कोन कहे आइसोटोन कहे आ न्यूट्रॉन केन बाहरे मास नंबर रो एटॉमिक नंबर फेडिले हमर कोन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाहरे बुझिला ये थिला हमर न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर एपर्यंत जदि कहारो को स्टेप रे कि न बुझी परलो ताहले पचारि पारो आज सेक्शन को क्लोज करबे समस्त बुझेले कि आज लाइव क्लास ओडिया रो लेटर एंड एप्लीकेशन करंतु ठीक अछि ठीक अछि ओडिया रो लेटर एप्लीकेशन करबा मु दुईटा मात्र अपलोड करछि ठीक अछि करबा आउ कार कोन डाउट अछि कि पचारि पारो ना न्यूट्रॉन मैटर करेनी न्यूक्लियस टा स्टेबल को नहीं न्यूट्रॉन ऊपर डिपेंड करेनी काली केतले क्लास हो काली मु जणेबी काली चैनल YouTube चैनल रे जणेबी व्यस्त होनी किंतु काली हमें ऑर्गेनिक डिस्कशन करबा एबे लाइव क्लास तुमको आउते रिमाइंड कर दोची समस्त लाइव क्लास जॉइन करो सांगनो भी को लाइव क्लास जॉइन करे पे कारण परीक्षा बाबू अल्प दिन रहला 18 रु 20 दिन अछि तेनु जेति जेति क्वेश्चन इंपोर्टेंट करा होची ताको प्रैक्टिस करो बुझियला जदि के को उतरे डाउट अछि कहारो पचारो
समस्त बुझेला कि न कार को डाउट अछि? हो ठीक अच्छी काली समस्ते क्लास जॉइन करिवो सब ऑर्गेनिक रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन हबो हालो अल्केन और हालारिन आ जो कहउछो सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन तमरो मु काली की प्रोवाइड कर देबी। आशा करछि समस्त को आज रो क्लास टी भल लागितो जदि भल लागिछि ताले निज सांगवान सहित शेयर करो लाइक करो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करो। थैंक यू हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग दिस लाइव क्लास।